नमस्कार ओडिशा ओडिया शिखा आपको स्वागत है अगेन B.Ed Entrance 2026 रो आ गोटे सेशन को आपको स्वागत। आज सेशन में आम आ गोटे टॉपिक यूनिट 3 आज गोल ऑफ एजुकेशन डिस्कस करबा। प्रीवियस क्लास रे हम किछि टॉपिक डिस्कस करथिले गोल्स ऑफ एजुकेशन ऊपर, देन सेथिरे किछि एमसीक्यूज भी डिस्कशन करथिले। ता अंडर रे आज सिलेबस हम 40 मार्क्स रो गोटे प्रीवियस क्लास डिस्कस करथिले। काली गतकाली टिके असुविधा जोगु नेटवर्क इशू जोगु हम क्लास नहीं पारि नथिले, किंतु तथापि आज चेष्टा करिबा ताको कवर करिबा पई। मु सिद्धार्थ आपण मानको स्वागत करछि आपण मानको चैनल ओडिया शिखिबा को, जोटी हमें अगेन आउ गोटे यूनिट सारिबा OMR प्रैक्टिस आज पर हम बुक हमें प्रीवियसली हमें सब रो थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस करि सारी छे टीचिंग एप्टीट्यूड, देन एजुकेशनल कमिशन एंड कमिटीज रो भी गोटे थ्योरीज वीडियो सरी जाई छी, देन OMR प्रैक्टिस रो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट सरी छी, मैनेजिंग क्लासरूम सरी छी, लर्न एंड लर्निंग रिलेटेड इश्यू सरी छी, देन आज गोल्स ऑफ एजुकेशन ऊपर आउ गोटे टॉपिक OMR प्रैक्टिस करिबा। प्रीवियस रे भी डिस्कशन हेई देला, स्टार्ट करिबा आज रो क्लासेस। ठीक अछि, अधिक डेरी करिबा नाही। ठीक अछि, आउ गोटे 50 मार्क रो क्लास। यदि प्रथम चैनल नुआ अछंती तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करे भूलिबे नहीं। ता सहित नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल सेट करते जहा द्वारा हमर आगामी वीडियो आपण मानको पाखरे सर्वप्रथम पहुंची परिबो। ठीक अछि, हम ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक कवर करि सरचे। देन एथरे आ गोटे इंडिविजुअल वर्सेस सोशल गोल्स, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, ए सब विषय रे भी आज कांसेप्ट रो OMR प्रैक्टिस करिबा। Goals of education actual meaning kono, we are not just talking about passing exams, we are looking at the holistic development of child, social efficiency and national integration. Okay, then tapore topic हम discuss करिबा जे let's high probability of questions जोटा आसीबार chances अछि B.Ed Entrance। wording टिके ट्रिकी रही पारे काहे कि ना क्वेश्चन डायरेक्ट न आस पारे, किंतु इनडायरेक्टली सेम क्वेश्चन को बुलाई पके पचारिबो। हिंदी क्वेश्चन आस पारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसीडर द प्राइमरी गोल्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन पचारि परिबो, होलिस्टिक डेवलपमेंट पचारिबो। होलिस्टिक डेवलपमेंट जिते बड़ी आसबो ऑल राउंड डेवलपमेंट आसी जिवो। ठीक अछि, छुनी की करिकुलर एक्टिविटीज हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, सब जिंस गोटे। ठीक अछि, फिजिकली मेंटली एंड थियोरेटिकली सब प्रकार डेवलपमेंट तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते। व्हाई होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर हबो ओवर द जस्ट जॉब रेडीनेस। टीचिंग नॉट एज जस्ट जॉब रेडीनेस फॉर जॉब, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर एज ए गाइड, टीचर एज ए नेशन बिल्डर। ठीक अछि, यही पार्ट रे गोल्स ऑफ एजुकेशन नो एटा ही माने आसे। ठीक अछि, make sure you revise these goals कहीं ना ये सब फाउंडेशन टीचिंग फिलोसफी रो। टीचिंग एप्टीट्यूड ओडिशा B.Ed एंट्रेंस 2026 रो ये सीरीज आपण मानन को जंती नेक्स्ट B.Ed कंप्लीट करिया पर्यंत मन रहबा दरकार, कहीं ना B.Ed रे भी आपण सेम जिंस पढिबे। जदि आपण को हेल्पफुल पाइले वीडियो शेष रे निश्चित भाव लाइक करिवे, शेयर करिवे अलग एस्पिरेंट्स मानक सहित आपण को फ्रेंड्स मानक सहित तथा आपण को ग्रेजुएशन ग्रुप रे जो माने B.Ed पे प्रिपेयर होचंती आम सहित जोड़ी परिबे। देन वे स्टार्ट करिबा क्लास। एन एजुकेटर हु लैक्स ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग, सकला जन एजुकेटर हु लैक्स माने जे जा भीतर नाही बा जे पछरे पड़ी जाए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल एम्स। एजुकेशनल एम्स कौन से जानिनी गोटे एजुकेटर। ठीक अछि, एन एजुकेटर माने जने टीचर आज के एजुकेटर एटे अछि। एम्स इज कंपेयर्ड टू व्हाट, ए सोल्जर विदाउट ए वेपन, ए सेलर हु डजंट नो हिज डेस्टिनेशन, ए ट्रैवलर विदाउट ए मैप, ए बर्ड विदाउट विंग्स। से कहिला जे गोटे शिक्षक जदि जानिनी तार
एम कौन एजुकेशनल एम कौन शिक्षागत उद्देश्य कौन शिक्षागत लक्ष्य कौन ताहले सी एमान भितर क्यों परिका गोटे सोल्जर ठीक अच्छे बा सैन्य विदाउट वेपन माने बिना अस्त्र शस्त्र ना जड़े ए सेलर माने नौका भाग बा नाउरिया हु डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन जे मझी नई अच्छी से जानी तार जीवन लक्ष्य कौन बा से कौटी पहुँचब कौ कूल को पहुँचब से जानी ता कूल कौटा ता शेषर लक्ष्य कौन ए ट्राभेलर विदाउट मैप गोटे यात्री विदाउट मैप रे ठीक अच्छे ए बार्ड विदाउट विंग्स गोटे पक्षी बिना डेणार या भर कौटा हम मन रखी ए सेलर हु डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन से जानी केमती डंगा चला जानी माने कौन एजुकेटर से कौन से जानी केमती पाठ पढ़ा हम जानी किंतु से जानी पाठर लक्ष्य कौन से डंगा चलवा जानी किंतु से जानी डंगा को नहीं कौटी पहुँचबार अच्छे ठीक अच्छे यहाँ हम करेक्ट आंसर बी से कहला the text uses the maritime analogy to show that without a predetermined goal aims ठीक अच्छे the process of education becomes directionless ठीक अच्छे which philosophy process proposes that the teacher should play an ideal and active role naturalism idealism pragmatism समस्त आंसर दौ था मु टिके आपण मानकु आम ग्रुप रो लिंक दे दोछि ठीक अच्छे ठीक अच्छे ग्रुप लिंक तो मुझे देवी तथापि टिके गोटे सेकेंड ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करदे ठीक अच्छे से कही व्हिच फिलोसफी प्रपोजेस द टीचर शुड प्ले एन आइडियल एंड एक्टिव रोल टीचर गोटे स्टूडेंट पे आइडियल हवा दरकार कौन ताप गोटे आइडियल हवा दरकार जे से जहाँ फॉलो करि परिबो गोटे आदर्श आदर्श शिक्षक हवा दरकार गोटे छात्र छात्र दृष्टि रे ठीक अच्छे आइडियलिज्म ठीक अच्छे से कौन कही आइडियलिज्म बिलीव्स इन हाई मोरल वैल्यूज and sees the teacher as a role model who must actively lead the student ठीक अच्छे गोटे स्टूडेंट पे आइडियल रोल मॉडल हवा दरकार who defined an aim as an orderly activity consisting in the progressive completing of process John Dewey Rousseau Pestalozzi Aristotle से कहला आंक भीतर किए कही जे aim as an orderly activity consisting in the progressive किए कही किए कही परिबो consisting in the progressive completing of a process किए कही क्वेश्चन एते क्रिटिकल भी नुह आराम से आंसर दे परिबा कथा रूसो कही ना कौन एक्सप्लेन्स नहीं सॉरी ड्यूई कही कि अच्छा सॉरी 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 मुझे टिके कन्फ्यूज हो गली अच्छा ड्यू कही हाँ pragmatist emphasized हाँ Dio John Dewey जी educationist a pragmatist emphasized that an aim is not just an end point but a systematic process of growth ठीक अच्छे the bread and butter aims is formally known as what knowledge aim vocational aim moral aim जो शिक्षा आज खाद्य वस्त्र कौन बासगृह ये सब जदि कार्य न लगी पारिबो ताले से शिक्षा कौन सफल शिक्षा हो पारिबो नाही ठीक अच्छे भोकेशनल एम ना कौन vocational aim ठीक अच्छे से कहला द vocational aim focuses on preparing students for a career so they can achieve economic independence earn their bread and butter गोटे सेकंड मते समय दे पले ओके
नेक्स्ट vocational aim गला एटा then आसिला the domain of learning concerned with head or mental skills so कहला the domain of learning concerned with head it is head हला or mental skills is what cognitive affective psychomotor social कोडा अरे हेड कहला माने ज्ञान भित्तिक नॉलेज मेंटल स्किल्स एटी अछि नॉलेज ठीक अछि हेड कहला माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक अछि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड नॉलेज एक्विजिशंस अंडर द कॉग्निटिव डोमेन ठीक अछि देन देखो एट एग्जांपल गोटे देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो ठीक अछि नॉलेज comprehension application analysis synthesis then evaluation एटा फाइनल स्टेज हैला फाइनल स्टेज किंतु एटाला कार फर्स्ट स्टेज रहला नॉलेज एटाला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी द कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज बेस्ड छोटा काम कोछ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी द कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज बेस्ड हायरार्किकल model used to classify who stated everything is good as it comes from the hand of nature प्रकृति कोलरु सब किछि आसे सेति पई ए सब भलो कथा की कहतले की कहतले कहंतु म तो आपण मानको समस्त को ग्रुप लिंक शेयर कर दउ जे माने चाहू छथि ठीक अछि से कहि जे हु स्टेटेड एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ नेचर प्रकृति कोलरु जहा सब आसे सब किछि भलो ठीक अछि आंसर दियो आंसर दियो मु ता भीतर टिके आपण मानक सहित ग्रुप लिंक शेयर कर दउ ओके फाइन ठीक अछि एबे ठीक अछि जे माने चाहू जंदी पछ चाहले हम ग्रुप रे जॉइन हे परिबे पर आंसर को जिबा एबे who stated everything is good at as it comes from the hands of nature रूसो कहिथिले ठीक अछि रूसो वाज द लीडर ऑफ नेचुरलिज्म जे से कहिथिले प्रकृति कोलर तांकर सब बिलीविंग दैट सोसाइटी करप्ट्स एंड नेचर प्रोवाइड्स बेस्ट एजुकेशन से कहले सोसाइटी कोन करे सब जिंस करप्ट करे किंतु नेचर कोन करे एक्चुअली जिंस को सब बेस्ट जिंस दिए आज प्रकृति कोलर शिक्षा जोटा हम कहू जे आउ की कहिथिले टागर भी कहिथिले प्रकृति कोलर शिक्षा ग्रहण कले छात्र व शिशु जल्दी शिक्षा ग्रहण करते ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जल्दी साइव सेशन इन द सोशल एम द इंडिविजुअल इज कंसीडर superior to the state inferior to the state society state or society independent of society the role sole reality social aim कहले हम कहूचे इन द सोशल एम कहले ठीक अछि सोशल एम जतोळे आसीबो द इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड एज कोन के कहि परिबो इन्फीरियर हबनी नीच हबनी हैला सोल रियलिटी भी हबनी काहे कि एरी सोल कथा उठिबो ही नाही ठीक अछि ठीक अछि देन
कहीं सोल इंडिविजुअल को आज इंडिविजुअल एम सोशल एम को आज इंडिविजुअल एम जब कनसीडर करा इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी सुपीरियर भी हेनी सर्वोच्चम हेनी सोल रियलिटी माने कौन गोटे गोटे ही सत्य यहाँ सत कथा सतता नुहे तो सोशल एम आर्ग्यूज दैट द स्टेट इज अल्टीमेट रियलिटी एंड द इंडिविजुअल एग्जिस्ट टू सर्व द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी who said individuality is a meaningless term apart from the social environment से कहले जे individual is a meaningless term apart from the social environment किए कहते रूसो कहते ना रस कहते ना पेस्टोलॉजी कहते ना किए कहते रस कहते ना किए रस जो सिंथेसिस थला तांकर रस को सिंथेसिस थला सेटा ना कोटा हाँ ठीक अच्छे आंसर देखिए से कहते रस एम्फसाइज दैट ए पर्सन्स पर्सनालिटी कैन बी ओनली डेवलप एंड मैनिफेस्ट विद इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट ठीक अच्छे तो सिंथेसिस व्यू ऑफ एजुकेशनल है आसीगला रस का synthesis view of educational aims suggest कौन हम individual should give in isolation society should control every thought individual and society are mutually supplementary aims are not necessary से कहला तो बड़े मॉडर्न एजुकेशन कथा आम कहे मॉडर्न सिंथेसिस ठीक अच्छे तो क्वेश्चन आसे मॉडर्न सिंथेसिस मन के मॉडर्न सिंथेसिस कहले कौन टुडे वी बिलीव ए स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बिल्ड्स ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी एंड ए हेल्दी सोसाइटी हेल्प्स द इंडिविजुअल ग्रो ठीक अच्छे सी ना कौन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर म्यूचुअल supplementary so modern theory suggests that developing the individual automatically helps the society and vice versa they both help them na knowledge for the sake of knowledge ki कहथिले कथा the core of what vocational aim knowledge aim adjustment aim spiritual aim knowledge for the sake of knowledge vocational na कौन 10 प्रश्न आम अच्छे knowledge aim which knowledge for the sake of knowledge is the core of knowledge aim ठीक अच्छे ज्ञान पाई ज्ञान ना कौन देखिए पढ़ी दबा एक्सप्रेशन द एम ट्रीट्स द acquisition of information and intellectual power as the primary goal of the school गोल्स उपर जिते सब गोल्स अच्छी टीचर गोल हो स्टूडेंट गोल हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गोल हो सबूर गोल्स उपर ध्यान दिया जाए गोल ऑफ एजुकेशन माने ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक अच्छे गोटे ह्यूमन को केमती डेवलप करवा आज ए सोसाइटी केमती निजक खाप खुआई चलवा से जिन देखा सेक्शन बी को आसिले स्पेसिफिक एम्स एंड कमिशन आसला A common criticism of the knowledge aim is that it creates skilled workers, mere intellectual animals, social reformers, patriotic citizens, social reformers. Na कौन ना skilled workers. A common criticism of the knowledge aim. Intellectual animal कथा कही देला से तो हबनी ना कौन किंतु क्रिटिसिज्म से कह क्रिटिसिज्म कथा कही माने समालोचना करवा जी कॉमनली माने जो गोटे मनीष को कहले कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ द नॉलेज माने वर्तमान समय नॉलेज कौन हो जाए इज दैट इट क्रिएट्स कौन कर मियर इंटेलेक्चुअल एनिमल्स केवल ज्ञानी पशु मान को तैयारी करा जो माने शिक्षित नुहंती केवल शिक्षार भूल व्यवहार करा केवल शिक्षा को आज जॉब रूप एक्सेप्ट कर सोसाइटी रो एम्स आ सोसाइटी रो गोल्स या किसी फुलफिल करा क्रिटिसिज्म एटी आस ठीक अच्छे
कहला critic argue that gathering facts without practical or moral application makes a person intellectual, animalistic but socially useless. ठीक ଅଛି क्रिटिकली तो आर्ग्यू करा जाए गैदरिंग फैक्ट्स विदाउट प्रैक्टिकल और मोरल एप्लिकेशन प्रैक्टिकल और मोरल नॉलेज बिना केवल फैक्ट्स द्वारा हबनी काम ठीक अछि खाली कहीदेले कथा रही जाए ना काम करने देखा पड़े ना कौन हु डिफाइंड culture as the capacity for constantly expanding the range and accuracy of perception. किए कहते जॉन डीवे कौन डीवे believed culture is about a deeper understanding of meaning in life rather than just book learning. Moral aim focuses on what? Learning science, earning money, character and strength of personality, political awareness. So, moral aim कौन? Character and strength of personality. ठीक है Character building is the highest aim for many educators, focusing inner stability and strength. ठीक है Who defined education as feeling pleasure at right things and pain at wrong things? Plato, Aristotle, Herbert Spencer, Rousseau, Rousseau लगा किए Aristotle कहते लगा से कहते Aristotle focused on the moral habitation of a child's emotional responses. ठीक है आ कौन कहते विषय 14 नंबर से कहते child emotional ऊपर कहते इमोशन ऊपर he believed education is about training your emotions to like the good and hate the evil. ठीक है के गोटे सेकंड पे समय दियो गोटे कॉल आछे मु टिक अटेम्प्ट कर दोजी से पर्यंत 15 प्रश्न उत्तर देउ तो महात्मा गांधी चीफ एम फॉर एजुकेशन इज फ्री इंडिया वाज व्हाट ओके ठीक अछि आमे अधारु तेले महात्मा गांधी सीपीएम फॉर एजुकेशन इन फ्री इंडिया वाज व्हाट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैरेक्टर बिल्डिंग वेस्टर्न साइंस कॉम्पिटिटिव सक्सेस कोटा कैरेक्टर बिल्डिंग building character is the aim of Mahatma Gandhi's for education in India. Gandhi believed virtue, courage and
strength of character were more important than mere literacy. ठीक ଅଛି तो citizenship aim is most essential for what? Monarchy, democracy, dictatorship, anarchy. Simple ଅଛି democracy ଅଛି ନା ନାହିଁ democracy ଅଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି democracy requires citizens who understand their rights, duties and the values of cooperation. Okay, complete living aim se kala complete living aim was expounded by whom? Rousseau, Herbert Spencer, John Dewey. Pestology किए हर्बर्ट स्पेंसर कहते एटा मन रखिबे थियरी गुडा सब मन रखिबो त मान नाउ ठीक अछि Spencer believed education should prepare one for all faculties body mind and soul ठीक अछि एबेसला harmonious development refers to the equal growth of what only math and science physical mental emotional and spiritual and aesthetic sides only vocational skills only memory only word usually avoid करो avoid only word को avoid करी सर ठीक अछि ओनली वर्ड को सब अवॉइड करिवो चकला 86 सुइटेबल इक्विलिब्रियम माने इक्विलिब्रियम माने सब भीतर बैलेंस रखिबा इक्विलिब्रियम माने बैलेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम सो दैट नो सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज नेग्लेक्टेड कोनोसी गोटी टॉपिक नेग्लेक्ट हेई न रहि जवा दरकार एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी वाज सेड बाय हुम जॉन डीवे एडम्स एरिस्टोटल रॉस के कहितले सिंपल सही अछि आंसर एडम कहितले ठीक अछि द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948 is also called what यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन राधाकृष्णन कमिशन ना मोदालियर कमिशन कोठारी कमिशन ना सर्जन कमिशन यूनिवर्सिटी आसले आराम से आखि बुझिबो राधाकृष्णन कमिशन पिटि दबो ना कोन ठीक अछि नेक्स्ट टॉपिक बुझिबो तो कौन कहला इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टू रिफॉर्म हायर एजुकेशन इन इंडिया एरा हमें ऑलरेडी डिस्कस करजे प्रीवियस क्लास ना को टीचर्स रोल्स ऑफ एंड competencies which commissions focused on increasing productivity and national integration radhakrishnan commission kothari commission mudaliar commission hunter commission कोटा से कहिछि increasing productivity and national integration इंटीग्रिटी आसला माने इंटीग्रेशन आसला माने कि आखि बुझिबो कोठारी की पिटि दबो ठीक अछि तो कोठारी कमिशन 1964 to 66 linked education directly to the national development goals ठीक अछि no system of education can rise higher than its teacher is a quote from कोठारी रिपोर्ट मोदालियर रिपोर्ट यूनिवर्सिटी रिपोर्ट एनपी 1986 रिपोर्ट क्वेश्चन नंबर 22 रे में अछि मोदालियर ठीक है the secondary education commission मोदालियर highlighted that the teacher is the most vital factor in school quality a facilitator moves away from the role of what guide dispenser of information manager creator a facilitator so like facilitator teacher as a facilitator moves away from the role of guide dispenser of information manager creator कोडो केउदुरु फैसिलिटेटर का आसिया दरकार क्वेश्चन नंबर 23 रे अछि हम कोदुरु डिस्पेंसर ऑफ इन्फॉर्मेशन मैनेजर रो कोनोसी टीचिंग रिलेटेड संबंध नाही क्रिएटर टीचिंग रिलेटेड संबंध नाही ठीक अछि डिस्पेंसर ऑफ इन्फॉर्मेशन केवल इन्फॉर्मेशन देला मशीन नुहे ता भीतर के टीचर आज इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइडर सेटर न होई कि आज फैसिलिटेटर गाइड रो बेटी गाइड जा फैसिलिटेटर सेया बुझि पाइलो गाइड टीचर आज गाइड टीचर आज फैसिलिटेटर टीचर आज नेशन बिल्डर सब गुड facilitator helps students learn for themselves rather than just lecturing at them lecture method ta ku सब बळे अवॉइड करा जाय मन रख दियोटा understanding a child's community profile is part of what conceptual competency
आउ थरे एटा कॉन्टेक्चुअल सॉरी सेटा कॉन्सेप्चुअल एटा कॉन्टेक्चुअल माय मिस्टेक कंटेंट कॉम्पिटेंसी ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी कोड अंडरस्टैंड कि चाइल्ड्स कम्युनिटी प्रोफाइल इज पार्ट ऑफ व्हाट क्वेश्चन 24 रे हम अछि contextual competence कहीं contextual competency involves knowing the socio-economic and cultural context of the students sorry okay, the three stages of transactional competency are what intro body conclusion planning teaching learning evaluation reading writing arithmetic observe reflect act question 25 रे हम अछि ठीक अच्छे प्लानिंग टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन कोदरे थिला ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी रे थिला देन आसिला दिस कवर्स द एंटायर साइकिल ऑफ ए टीचर्स वर्क विथ ए लेसन ओके अकाउंटेबिलिटी आसिला अकाउंटेबिलिटी टू स्टूडेंट इंक्लूड्स व्हाट गिविंग हाई मार्क्स टू एवरीवन स्टिकिंग स्ट्रिक्टली टू द बुक टॉलरेंस टुवर्ड्स मिस्टेक्स एंड मिसचिफ नेवर टेकिंग लीव स्टूडेंट मानक प्रति टॉलरेंस रहा दरकार से मानको भूल ऊपर से दुष्टामी ऊपर ठीक अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इन्वॉल्व्स ए सिंसियर लव एंड पेशेंस टू हेल्प चिल्ड्रन ग्रो विथ द एरर्स ठीक अच्छे adjustment aim views life as what a peaceful journey a struggle with environmental condition a pursuit of luxury only spiritual so adjustment aim views life as what कोटा ए स्ट्रगल विथ एनवायरमेंटल कंडीशन एडजस्टमेंट अछि ना ठीक अछि द सेम टीचर्स चिल्ड्रन हाउ टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड NP 1986 suggests teachers should be generally not stay at one place for more than 5 years ठीक अछि गोटे जगह टीचर 5 वर्ष अधिक रहि परिबे नाही दिस इज इंटेंडेड टू मेंटेन प्रोफेशनल फ्रेशनेस एंड prevent stagnation in school ठीक है teacher is a social engineer because they build roads fix computers सेटा ए दिटा तो कोठा हबनी ए दिटा तो कोन संपर्क नै only teach math ना mold the character परिस्थिति हिसाब रे कोन निजो को बदलैबा निजो को मोड़ीबा निजो को भंग करबा निजो को भांगीबा पिला मानन पय character of future citizens they build human capital of a nation making them architects of society okay which is a key area of professional ethics relation with management relation with political parties personal hobbies wealth accumulation like key area of professional ethics relation with political parties na relation with professional ethics कथा दो आसिला भल से ध्यान दो कोडा एटा हटै दियो प्रोफेशनल एथिक्स से तेरा आसीबनी वेल्थ एक्युमुलेशन आर कोन संपर्क नै पर्सनल हॉबीज रे प्रोफेशनल कोन से काम नै रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट काहे कि प्रोफेशनलिटी क्वेश्चन आसे प्रोफेशनलिटी पॉलिटिकल पार्टीज रे एजुकेशन कोन से काम नै ठीक अछि परवर्ती प्रश्न हो जाओ So the code specifically mentions building mutual trust and respect with school authorities and management. Okay. It is like ethics and classroom conduct. Teachers should avoid which habit in front of students reading books, smoking and chewing beetles, leaves, lesson planning, using computers. Who habit should have पिला मानक सामने avoid करिया दरकार. Simple. Chewing, कोटा. Smoking and chewing. एरा सब पिला कौन सीखी ओटे सीखी ठीक अछि टीचर मस्ट वर्थ example image these habits undermine that image the guide on the side role refers to the what principal facilitator peon librarian teacher as a facilitator एसटी अछि त मान जानि छ प्रिंसिपल लाइचे रहिबनी peon as रहिबनी librarian as रहिबनी से गाइड ऑन साइड पिला मानक छात्र छात्री गाइड हिक रहितबे जे facilitator. It describes the shift from teacher center to student center learnings. The spiritual aim is most supported by
what? Naturalist, idealist, pragmatist, realist. কোটা আবে তো আইডিয়ালিস্ট, ঠিক আছে। সেগুলো আইডিয়ালিস্ট প্রায়োরিটাইজ স্পিরিচুয়াল ভ্যালুজ, সেলফ রিয়েলাইজেশন অ্যান্ড ডিভোশন টুয়ার্ড হায়ার পাওয়ার্স, ঠিক আছে। 34 নম্বর, a complete a complete picture of teacher appraisal involves data from what? Only the principal, colleagues, students, parents, only exam scores, only self reflection না, সেলফ রিফ্লেকশন রহিবানি। କାହିଁକି ରହିବନି? ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ନିଜେ ଯାହା ଦେଖିଦେଲ ସେହାକୁ ଜଜ୍ କରିଦେବା ନା। ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ସ୍କୋର୍ସରୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବାନି, ହୋଇଥାଇପାରେ କିଛି ମେଣ୍ଟାଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିନଥିବ। ଓନ୍ଲି ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ନା, କଲେଜଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା, ଅନ୍ୟ ଟିଚର୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ଏତେ କ'ଣ ତାପରେ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତେ ଖରାପ ମାନ ରଖୁଛି କି। ମଲ୍ଟି ସୋର୍ସ ଆପ୍ରେଜାଲ ଇନଷ୍ୟୁଟ୍ସ a fair and holistic view of a teacher's accountability. Mastery over hard spots of learning is a part of what? Contextual competency, content competency, transactional competency, management competency. So, mastery over hard spots of learning. Kuda content competency. So, contextual competency rahibani, ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी रहिबनी, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी भी, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी आधार किसी संपर्क नहीं। से मास्टरी ओवर हार्ड स्पॉट्स ऑफ लर्निंग, जोटे गोटे टॉपिक थाए पढ़ारे जोड़ा को सब पिला मानन पे कष्ट टिके थाए, सेटा को कहंती कंटेंट कॉम्पिटेंस। तापर भलो नॉलेज रखियो, मास्टरी रखियो, कंटेंट कॉम्पिटेंस को जे कंटेंट मास्टरी मींस नोइंग द सब्जेक्ट सो वेल यू कैन आइडेंटिफाई एंड सिंप्लीफाई द हार्डेस्ट parts for kids. The professional ethics requires a teacher to have high profit motive, अपनी strict isolation, political ambition ना, dignity and integrity. Professional ethics असला. Okay. Teaching as a noble profession that relies on moral conduct and professional standards. Who designed education for a rural and agrarian populations? John Dewey, Mahatma Gandhi, Herbert, Aristotle, Mahatma Gandhi कहते, ठीक है। Gandhi's basic education focused on reality of India's village-based economy, rural area रो condition पर कहते। Impartiality means treating all students the same regardless of their age, their level, their grade level, एटा कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन, ठीक अच्छे। एगुड़ा तो फिजिकल ये, ठीक अच्छे। These are the fundamental markers of identify that must never lead to discrimination in a classroom. Okay, mentoring is defined as what? Offline help to make significant transition in thinking, grading exam papers, giving a long lecture, cleaning the classroom. mentoring କଥା ଉଠିଛି କୋଉଟା ଏଠି ଅଛି। ଅଫଲାଇନ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ମେକ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଇନ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମେଣ୍ଟରିଂ। ଆଜ୍ ଏ ମେଣ୍ଟର ହବାଟି, mentorship is a specific but special supportive relationship that helps a student grow beyond that just basic lesson. Without social contacts we are not human, was said by whom? Rousseau, John Adam, Herbert Spencer, Thompson. Same किए जॉन आडम कहते। Adam argued that society is medium required for individuality to grow. And as a general teaching aptitude highlights, extreme social aim can make a person what? Leader, creative, artist, scientist, cog in machine. Question actually is much. Kuda cog in the machine. Kahinki? If society was state is too dominant, the individual loses their unique personality.
ठीक अच्छे माने कौन ना कहले वार्निंग एगेंस्ट एक्सट्रीम सोशलिज्म इन स्कूल्स where students become identical robots serving the state स्टूडेंट को आज रोबोट हिसाब से न देखा दरकार स्कूल गुड़ा करे आज डोंट ट्रीट देम लाइक मशीन्स केवल घोषा मशीन से जिनसे न हवा दरकार ठीक अच्छे एजुकेशन इज द थियोरी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इज द theory of education in its most general phase according to whom Adam John Dewey Ross Aristotle John Dewey linked that abstract philosophy directly to the practical education. The Moodle Commission focused on what? Primary education, secondary education, university education, adult education, secondary education. देखो character means inner stability and strength according to whom Aristotle, Herbert Spencer, Dewey. Character माने inner stability Herbert Spencer. ठीक है emphasize that character is the ultimate safeguard of a person. Self-appraisal is a method used for whom? Student grading, teacher accountability, school building design, budgeting. Teacher accountability. ठीक है Teachers evaluate their own performance to improve their professional standards. ठीक है टिके थंडा हो जाइए टीचर एसोसिएशन एम्स टू व्हाट प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करवा ना भूल अर्न मोर प्रॉफिट नो बर्तमान समय तो ये चलती असाइन होमवर्क टीचर एसोसिएशन कही propagate professional knowledge and skills. The primary goal is the professional efficiency and status of the teaching cadre. A rudderless vessel refers to what? A student with a textbook, a school building, a computer, and a child without an educational aim. Rudderless vessel माने एम हीन माने उद्देश्यहीन शरीर उद्देश्यहीन व्यक्ति एटा कहूँ चाइल्ड विदाउट एन एजुकेशनल एम शिक्षा के तो कौन उद्देश्य बिना गोटे शिशु वेसल ओनली गोटे शरीर दिस मेटाफोर इलस्ट्रेट्स हाउ ए चाइल्ड लिव्स एमलेसली विदाउट ए क्लियर गोल इन एजुकेशन टीएलएम स्टैंड्स फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन these are tools like charts maps and videos used to enrich classroom experience. NCT formulates competencies for what? Teachers, National Council for Teacher Education. Self-realization is the main aim of what? Vocational education, spiritual by idealistic education, physical education, economic education. Self-realization means spiritual, idealistic education. Okay. It focus on discovering the self and higher values through meditation and reflection. ठीक है आशा करुच्ची यूनिट 3 कंप्लीट हो सारी समस्ते जो टॉपिक एज पर बुझी पारिथिबे जदि जहार किछि भी डाउट्स अछि निश्चित भाव में नेक्स्ट टॉपिक रे आम डिस्कस करबा निश्चित भाव में कमेंट जनबे तो आशा करुच्ची समस्त वीडियो बुझी पारिथिबे जदि वीडियो भल लागितो निश्चित भाव चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करिवे बोले ता सहित निज +3 ग्रेजुएशन ग्रुप रे अन्य फ्रेंड्स माने जो माने प्रिपेयर होचंती आम सहित जोड़िया पई शेयर करि परिबे तो ये वीडियो रेती पुणी देखा आगामी वीडियो धन्यवाद जय जगन्नाथ सारी बंदे उत्कल जननी।